Hello, everybody. Welcome to the Creative Edge YouTube channel. I am Muskan Mulchandani, and we are going to be doing rearrangement of sentences today. It's an easy section where verbal ability is concerned. Nevertheless, we have never approached it in this way. So maybe this is going to be a new thing for us to learn. All right. So just let's get on ahead with it, and we'll see along the way how we fare here. What you can see on the screen in front of you is a sentence that is jumbled up. All right. Now, can you tell me how we can rearrange this sentence in a legible way? Yes, that's the right way to rearrange it. Okay. Now, when we are doing these kind of questions, the question is not this easy. We have a sentence that is much lengthier and a little bit of a higher difficulty level than what we are doing right now. But this is just an introduction as to what kind of questions, what rearrangement of sentences or parajumbles is about. All right, let's go to the next question. Yes, I'm sure that while reading the sentence, half of you all must have come to the answer or to the conclusion of what the right sentence should read like. And you must have come up with either of the two options. Now, when we are reading the sentences, you'll realize that both of them sound grammatically right. But are they logically right too? So, no, the answer is no. The first sentence is grammatically right, but the question also asks us to give us a logically correct answer. Of course, you must have a God complex to run and cause rain, which is what is stated in the first question. तो इसलिए पहला वाला क्वेश्चन सही नहीं है और आंसर होना चाहिए आपका दूसरा वाला क्वेश्चन. इसको अप्रोच करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बट सबसे इजी तरीका तब वो होता है जब हम उसको एक सेंटेंस किस ग्रुप की तरह लेते हैं. जब हम छोटे थे हम एक ऐसे लिखते थे. ऐसे में क्या करते थे हम इंट्रोडक्शन लिखते थे, फिर बॉडी लिखते थे, फिर उसके बाद लिखते थे कंक्लूजन, है ना. तो हम जब इंट्रोडक्शन देते थे तो उसमें हम एक आइडिया को इंट्रोड्यूस करते थे. उसके बाद हम कंटिन्यूएशन में क्या करते थे, उसी टॉपिक के बारे में उसकी प्रोज बताते थे, कॉन्स बताते थे, या उस टॉपिक के बारे में और बताया जाता था. और लास्ट में हम क्या करते थे, उसको कंक्लूड करते थे. तो सिंपल है, एक पैराजम्बल या एक री अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में भी यही इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे. तो आपका जो पहला सेंटेंस होगा वो जनरली एक इंट्रोडक्शन होगा आइडिया के लिए. The second and the third sentences will be your continuation of the idea, and your last sentence is most probably going to be the conclusion of the idea. Do remember that the nouns will be the heroes. So look out for the nouns in the sentences. जहां पर भी आपका ध्यान nouns पर जाए, ध्यान रखिएगा कि आप उसको जरूर मार्क करें, क्योंकि लगभग पूरा पैराग्राफ उसके बारे में बात कर रहा होगा. ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इजी करते हैं इसको और थोड़े से टिप्स ट्रिक्स समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इंट्रोडक्टरी एंड द कंक्लूसिव सेंटेंस. आपके सामने एक पैराजम्बल है, उसके 4 ऑप्शन पार्ट्स भी दिए हुए हैं. इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिखेगा जब आप एक क्वेश्चन पेपर में पैराजम्बल को या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को देखेंगे, का क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, अब दिखने में तो ये बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, बट फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंट्रोडक्टरी आइडिया या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, वो कौन सा सेंटेंस है और एक कंक्लूसिव सेंटेंस कौन सा है. तो अब फिलहाल हम ऑप्शंस के पेयर्स को नहीं देखते हैं, वो जो नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपने ABCD सेंटेंसेस पर ध्यान देते हैं. ठीक है, alright, so Christmas is celebrated every year on 25th of December would most probably be your. तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और हमारा कंक्लूसिव सेंटेंस कौन सा है. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. आइडेंटिफाई द लिंक्ड सेंटेंसेस. अब इसका क्या मतलब होता है?
जब हम किसी भी जब हम उन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, हमको लगता है कि यार सी तो बी के बाद ही आ सकता है, या ए तो डी के पहले ही आना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं हम लिंक्ड सेंटेंसेस। ऐसा आपको ए बी सी डी वाले ऑप्शंस में किन में से लगता है? यस, बी और डी में कुछ तो लिंक है। द रीजन इज दे आर टॉकिंग ऑफ क्रिसमस बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 25th of December, and in the D sentence they are talking of the festival marks, which means that D is related to B somehow. All right, let's go on to the next point. Find the transition words, the pronouns and the adjectives. I'm sure जब आप पढ़ रहे होंगे आपको कंक्लूसिव सेंटेंस ढूंढते वक्त ही समझ में आ गया होगा कि ये कंक्लूसिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि वहां पर एक वर्ड है हेंस, राइट? तो जिस तरीके से हमको ये समझ में आया, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन वर्ड। ठीक है, इस तरीके से ट्रांजिशंस होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ट्रांजिशंस बताते हैं। हो सकता है वो ट्रांजिशन कंजंक्शन के रूप में हो सकता है एक कंटिन्यूएशन हो सकता है एक नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन हो, उसकी उसका एक वर्ड मेंशन करे, या हो सकता है किसी कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को वो मेंशन करे। हम उसको थोड़ा डिटेल में बाद में समझेंगे, बट फिलहाल आपको ये हेंस वर्ड से समझ में आ गया कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं। ग्रेट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन्स, you know definitely that a pronoun is bound to come only when the noun before has been mentioned. All right. Also, similar is the case for adjectives. I cannot just say beautiful. I have to say something after that, right? So it has to be beautiful house, beautiful girl, beautiful bag, something of the sort. So your adjectives will also have a presence only when the noun pertaining to it is present. In this part, if we go to see clearly, hence and his are the two transition words and the pronouns that we are being talked of that show us the linkage of the sentences. All right? ठीक है? तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत इजीली अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स जस्ट रीड क्विकली टुगेदर एक बार फिर से। Jesus Christ is worshipped as the Messiah of God in Christian mythology. Christmas is celebrated every year on 25th December. Hence, his birthday is one of the most joyous ceremonies among Christians, and the festival marks the celebration of the birth anniversary of Jesus. तो जैसा आप लोगों ने बताया था, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड हमारा फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, जिसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन ए और सी रहता है। डी से शुरू होने वाले जो दोनों ऑप्शंस हैं बी और डी, वो दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं इस केस में। ठीक है, और खत्म किससे होना चाहिए? हमारा सेंटेंस खत्म होना चाहिए हम लोगों का हेंस से, which means your answer has to be option C. Wasn't this easy? Yes, it was. All right, let's quickly just go through some more tips. Okay, जिस तरीके से हमने नाउन और प्रोनाउन का कंपैरिजन देखा, उसी तरीके से हम एक कॉज और इफेक्ट का कंपैरिजन भी देख सकते हैं बहुत सारे इसमें। जैसे हम लोगों ने पहले किया था वो जो एक रैन टूवर्ड्स द बस स्टॉप वाला, तो रैन टूवर्ड्स द बस स्टॉप वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, बट ग्रामेटिकली ठीक था वो, बट वो इसलिए ठीक नहीं था क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले बारिश हुई एंड देन ही रैन टूवर्ड्स द बस स्टॉप। वो भागा इसके लिए बारिश हुई, ऐसा कुछ नहीं था, राइट? सो योर कॉज एंड योर इफेक्ट हैव टू बी कोरिलेटेड। नेक्स्ट कम्स एक्रोनिम्स। डू यू नो व्हाट एक्रोनिम्स आर? बहुत ही फेमस एक्रोनिम है हमारी सेंचुरी का, अब इस सेंचुरी का, जो है नमो। सुना है आपने? तो राइट, तो मैं नमो तब बोलूंगी जब मैं 4 बार नरेंद्र मोदी का नाम ले चुकी होंगी, राइट? ओनली देन विल यू बी एबल टू रिलेट टू दिस एक्रोनिम, or else it is going to be difficult for you. Okay, let's go to the next one. It says chronological hint. Now, what is chronology? Yes, time frame. When I'm talking of 1947, you will immediately be transported to that year. But when I talk of 1990, you will immediately come back to the closer present. So when I talk of 1990 first and then talk of 1947, of course, I should be either having words that show this change in time frame, or I should talk of the time frame as from previous to now. All right. The next one says common sentence to specific sentence. A very easy example that I would like to give here is a girl rides a bicycle.
The bicycle is red in color. The bicycle has a blue seat. The blue seat has yellow flowers. Now, what did I do? What I did was when I was talking in general, okay? I'm talking of a girl riding a bicycle. Now, when I wanted to mention which specific bicycle the girl was riding, I changed my article from a to the. When I wanted to lay stress on which seat we were talking of, I changed the seat from a blue seat to the blue seat. So, as and when you progress in sentences, the common sentences change to specific sentences. The last one is question and answer. Very easy. I cannot give you an answer and then expect a question. It always has to be a question first and an answer following it. All right. Now let's quickly go through a few keywords that we might encounter while we are going through the rearrangement of sentence questions. Introduction. In introduction, the words that we come across would be once and nowadays, beginning. Can you have also? No, you cannot. The reason being, it is not an indicator of an introduction. So you cannot have that as an introductory sentence. The next one says conclusion. Clearly, thus, therefore, eventually, finally, and so. Is that all? हमने अभी अभी कुछ देर पहले hence एक और word किया था जो एक conclusive sentence को दर्शाता है. Next one says comparison. Similarly and likewise. Of course, there are a lot more in this same thing. Contrast. On one hand, but, yet, however, nevertheless, although, whereas, and some more. Okay. Additional info. Also, additionally, and then. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमको बताते हैं कि हमारे पास और भी इन्फो नेक्स्ट सेंटेंसेस में आने वाला है. सोर्स इंडिकेटर्स फर्स्टली सेकेंडली. जैसे समझ लीजिए किसी के दो लोगों के या तीन लोगों के ओपिनियंस मेंशन करे हुए हैं, तो शायद शुरुआत में वो एक आइडिया इंट्रोड्यूस करें, फिर उस आइडिया पे पहले बंदे का ओपिनियन देंगे, फिर उसके बाद दूसरे बंदे का ओपिनियन देंगे, फिर उसके बाद वो कंक्लूड करेंगे पर मैं तो इस बात को नहीं मानता. तो इस तरीके से आपका सोर्स इंडिकेटर यूज किया जाता है बाय यूजिंग फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली और इन माय ओपिनियन एंड थिंग्स लाइक दैट. ऑलराइट. I hope that this class was as fruitful to you and fun for you as much as it was for me. And for any more uh, info, you can visit our website or you can visit the Insta handles and the Telegram handle. And it's mentioned in the description link below. Thank you. Have a nice day. Also, I would like to point out that we are going to be having a continuation of this same class and we'll be solving a few examples using these same tips and tricks that we discussed in this class. All right. Thank you so much. Have a nice day.